Hello everyone and welcome to EduTap. So guys, today we are here to discuss some very important questions for your RBI Assistant exam. So guys, first of all, I wish you all the very best for your upcoming exam, and I wish that you do really well in this paper and you come out with flying colors. So guys, if you can see me and if you can hear me, give me a thumbs up in the chat box. Hello Anuj, how are you? All right, the camera. All right, let me just adjust the camera. I think now you shall be able to see me, right? All right, guys. Let's begin. So, guys, in this session, we will be discussing some very important questions for your exam. So, guys, if you can hear me and if you can see me, give me a thumbs up. Hello, Anuj. Am I audible? Hello, Tharv. How are you, dear? All right, guys. So take out your notebooks, take out your pens, and you have to solve these questions right here, right now with me. Right. So we will be discussing questions, and you will face such questions in your exams. So gradually we will increase the level of questions, and we will be discussing those questions for you. All right, guys. So let's begin, and everybody has to participate. So question number 1, guys. So what you have to do in these questions is you have to find the erroneous part in the following sentences. So we will be covering two sections here: error detection and sentence improvement. Right. So let's go, guys. Question number 1. Don't answer ahead. Just answer as we go along. Right. So question number 1: page after page of Quran were read, and it gave great consolation to his mind. Yes, guys. Can you find the error in this? Very good, Praveen. Very good. So, page after page of Quran were read or was read? So, it should be page after page of the Quran was read. So, what is the logic here, guys? Now, always remember this, guys. Whenever a noun is repeated before and after a preposition, whenever a noun, now remember this, guys, we will be discussing the concepts as well. So whenever a noun is preceded and followed by a preposition, so we always have to remember in such situation, both the nouns are always kept singular. Now we know this rule, but subconsciously, right? For example, day to day, one by one, right? Door to door, step by step. Yes, we never say steps by steps. We never say days by days. We say step by step, day by day, one by one. So whenever a preposition is preceded and followed by the same noun, right, both the nouns are to be kept singular. Along with that, what you have to remember is the verb also has to be kept singular. Right? Very good, Rose. Very good, Anuj. So what should be the answer here? Page after page of. Now there is another error here, guys. That was there in part B. So we have to use not Quran, the Quran. That was also one error in this. So you may face these questions these times, guys. So we have seen,
RBI throwing very very different type of questions to the students every year. So what you have to focus here on is that you do not make such mistakes. There may be, I'm sorry guys, there may be questions like that. They may give you a question like this. There are 4 parts in a sentence, and there may be error in 3 parts, and you may have to find the one part which does not have any error, right? So that can also be asked to you. So please read the instructions very carefully before answering the questions. Good evening, Garna. Welcome to the session, dear. So it should be page after page of the Quran. Why are we using the Quran, guys? Always remember, name of any holy book, any religious book, it has to be preceded by the Gita, the Quran, the Guru Granth Sahib, the Bible, the Ramayana, the Mahabharata, right? They're religious books, the Vedas, the Puranas. So whenever you name a religious book, you have to use the before it. And the other error, we found that it should not be were, it should be was. Yes, guys. Chalo. Moving on to question number 2. One day, a baker decided weighing the butter to see if he was getting a pound and found that he was not. Yes, guys. What is the error here? Page after page of the Quran was read. ये हमने कर लिया, सबको समझ आ गया? Now next question is, one day a baker decided weighing the butter. So basically he's saying a baker was getting butter, and he decided to weigh that if he was getting the right amount, and he found out that he was not. नहीं प्रवीण, it was not, वो बिल्कुल ठीक है, वो he was not. One day a baker, right? So we are talking, the subject is baker here. So a baker decided weighing the butter to see if he was. So when we are talking about he, if he was getting a pound and found that it was not, or he was not, this is absolutely correct. But the first answer was absolutely right. Decide is followed by not a gerund but by an infinitive. So guys, we have to remember, we cannot use gerund after any word. There are specific words. For example, like. So I like playing cricket. I enjoy cooking food, right? So there are certain words that I've given in the course, that I've provided in the course, that you should remember. So decided will not be followed by a gerund, which is ing form of verb. It has to be 2 plus v1. Sorry, I think I wrote ing here, right? It should be 2 plus v1, right? So it should be, one day a baker decided to weigh the butter to see if he was getting a pound and found that he was not. So that is the correct answer, guys. कहाँ पे 8 कहाँ पे है रवीन? मुझे अच्छा, दोनों जगह पे 8 होना चाहिए, ये कह रहे हो आप? One day a baker decided to weigh the butter to see if it was getting a pound and found that it was not. It तो यार नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज होता है ना. तो यहाँ पे ही बिल्कुल ठीक है बेकर के लिए, वो उसमें कोई एरर नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3. There is more gratification for being a caring person than in just being a nice person. This is a question based on preposition, guys. There is more gratification for being a caring person than in just being a nice person. Very good, Mitesh. Very good, Praveen. Yes, guys, I want all of you to answer the question, first of all. And guys, don't forget to like the session, so that it may reach someone who actually needs it, guys. So that is the least you can do. So don't forget to like the session, guys. And if you want to, you can share it as well. Very well done, Anuj. See, there is more gratification, not for being, in being a caring person, gratification in doing something. So gratification is basically satisfaction, right? Moral satisfaction. So moral happiness is called gratification. So there is more gratification, not for being, in being a caring person,
then see, it is given in the further part of the sentence as well. So there is more gratification in being a caring person than in just being a nice person. Very well done, guys. Very good, Anuj. So it should not be for, it should be in. Next question, guys. Relationships are built in kindness, understanding, and self-sacrifice, not on jealousy, selfishness, puffed up egos, and rude behavior. Hello, Biswanath. How are you? Very good, Mitesh. एक बार और पढ़ो मितेश, गलती सही पिक की आपने, लेकिन आंसर आई थिंक यू नॉट राइट देयर, नॉट बाय प्रवीण. सी, आगे उसने पूरा सेंटेंस पढ़ो एक बार, वो क्या बोल रहा है? रिलेशनशिप्स आर बिल्ट इन काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ सैक्रिफाइस, नॉट ऑन जेलसी. तो वो क्या कह रहा है कि भाई रिलेशनशिप्स मतलब रिश्ते काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ सैक्रिफाइस से बनते हैं, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि जेलसी, सेल्फिशनेस, पफ्ड अप ईगोज एंड रूड बिहेवियर. यस, वेरी गुड अनुज, वेरी गुड मितेश. इट शुड बी ऑन. So relationships are not built by, it should be relationships are built on kindness, understanding and self-sacrifice, not on jealousy, selfishness, puffed up egos and rude behavior. So it should not be not by, it should be on, because in the further part of the sentence they have given you a similar preposition like that. So relationship, and you know, see guys, when you have a common subject for two clauses, like in question number 3 and question number 2 as well. See, question number 2, baker was the subject. A baker decided to weigh the butter to see if he is used here for baker, if he was getting a pound, and found that he was not. So both places he was used for, he has been used here for the baker. Now, same in question number 3, there is more gratification in being a caring person than in just being a nice person. So the subject here was gratification. Similarly, in question number 4, relationships are built on kindness, understanding and self-sacrifice, not on jealousy, selfishness, puffed up egos and rude behavior. So when you see that, there are two clauses which have a common subject. So both the clauses should be in the same tense, and they should use a similar preposition as well. Got it? Very well done, guys. All right, moving on. Next question, guys. Question number 5. Right. I think my keyboard is acting up here. All right, yes. So yes, guys, question number 5. He resolved being tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic to the striving, and tolerant of the weak. He resolved being tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic to the striving, and tolerant of the weak. Now, if you have prepared for preposition properly, you should be able to find the error in this. Very good, Mitesh. Very good, Manisha. Very good, Mukesh. अथर्व ने सही आंसर दिया. गाइस, गलती आप पिक कर लेते हो, all of you. Very well done. Kudos to that. But सही आंसर देखो, आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा अपने आंसर्स पे? जब आप सही गलती पिक करो और ये भी आपको पता हो उसमें सही आंसर क्या होना चाहिए. That is the key part here. So he resolved being tender with the young. See, with is used with tender, compassionate with the aged. With is used for compassionate, sympathetic to the striving. So to is used with sympathetic, and tolerant, not of the weak, tolerant to the weak. Right? You should be tolerant to the difficulties of life, not tolerant with the. So tolerant to the weak hota hai. Very good, Praveen. Very good, Pratik. Very good, Atharv. Good job, guys. चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. Marketing companies spend close to $1 million for a 30-second advertisement between a major event.
Let's see if you are able to find the error in this. Very good, Mukesh. Spent एक जनरल बात कर रहा है साई कृष्णा। देखो उसने एक हैबिचुअल बात बोली कि मार्केटिंग कंपनीज लगभग $1 million खर्च देते हैं एक सिर्फ 30 सेकंड एडवर्टीजमेंट के लिए बिटवीन अ मेजर इवेंट। वेरी गुड मितेश, वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड विश्वनाथ। बिटवीन इज द एरर। से बिटवीन क्या होता है इस दो चीजों के बीच में, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है कि मार्केटिंग कंपनीज $1 million खर्च देते हैं सिर्फ एक 30 सेकंड एडवर्टीजमेंट बिटवीन अ मेजर इवेंट और ड्यूरिंग अ मेजर इवेंट। एक मेजर इवेंट के दौरान कंपनीज इतना पैसा खर्च देती हैं सिर्फ एक छोटे से एडवर्टीजमेंट के लिए। नॉट फॉर अनुज, ड्यूरिंग अ मेजर इवेंट। गलती आपको सही पिक हो जाती है सभी को। क्या सर यही तो प्रॉब्लम है, गलती सही हो जाती है लेकिन उसके बाद हमें आंसर का नहीं पता होता कंफर्मेशन क्या है क्या नहीं। राइट, very well done nonetheless guys, very good. So that is why we are doing it. We want to practice it, right? The more you will practice, the better you will get at it. Next question guys. People who do not want to adhere to any moral standards keep changing the definition of morality on saying nothing is right or wrong, only your thinking makes it so. I'll read the question again. People who do not want to adhere to any moral standards keep changing the definition of morality on saying nothing is right or wrong, only your thinking makes it so. Very good Mitesh, very good Praveen, very good Manisha. So people who do not want to, मतलब जो लोग कोई moral standard नहीं follow करना चाहते, वो क्या बोल के morality की definition क्या बोल के change करते रहते हैं कि भाई कुछ सही गलत नहीं होता, सिर्फ thinking से ठीक और गलत होता है। So people who do not want to adhere to any moral standards keep changing the definition of morality, not on saying. It should be by saying nothing is right or wrong, only your thinking makes it so. Very well done. Adhere का मतलब होता है to जैसे हम कहते हैं ना to follow the rules. So adhere to any moral standards, that means to follow any moral standards. So adhere to the word limit बोलते हैं ना, adhere to the time limit, मतलब उसको फॉलो करना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अदेयर। और अदेयर के साथ टू लगता है गाइस, याद रखना हमेशा। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। सो अदेयर टू होता है एंड अदेयर मींस टू ओबे द रूल्स या टू फॉलो द रूल्स, उस तरह से यूज करते हैं इसको। गॉट इट साई कृष्णा? चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अनलेस यू डू नॉट बिल्ड योर सेल्फ एस्टीम, यू कैन नॉट अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। Yes, guys. There is error in C part. Okay, what is the error in this C part, Mukesh? Very good, Praveen. Very good, Vishwanath. Very good, Mitesh. See, guys, this is again another rule that you have to remember. That two negative words are never used in the same sentence. अभी आप कैसे याद रख सकते हो गाइस? मैथमेटिक्स में आपको ये चीज पढ़ाई जाती है हमेशा कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही रूल है कि दो नेगेटिव वर्ड्स जब इकट्ठा एक सेंटेंस में जुड़ते हैं, सो दे बेसिकली दे मिस रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं गाइस, आप लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये यू कैन नोट देम डाउन। नो, नॉट, not, never, neither, nor, hardly, barely, scarcely, rarely, seldom, until, unless, and forbid. Guys, please note down these words so that you can remember them. That if any of these words is used in a sentence, always remember it cannot be followed by another negative word. For example, I hardly don't know anything about him. I hardly know anything about him. See, hardly itself means very meager, right? So I hardly know anything about him.
I rarely never do this, or I rarely do this. So I don't know nothing about you. I don't know anything about you. Right? Very well done, guys. So the error was unless you do not build, this cannot be used here. Because unless itself is a negative word. Unless means जब तक तुम ऐसा नहीं करते. So unless you build your self-esteem, you cannot achieve success in your life. See, अब बच्चा बोलता है सर यहाँ पे कैसे आ सकता है फिर? This is the second clause. This is a different clause. यहाँ पे आ सकता है क्योंकि ये अलग क्लॉज है. लेकिन इस वाला ये जो सेंटेंस था ना, ये जो पार्ट है यहाँ तक सेल्फ एस्टीम तक, यहाँ तक वाले पार्ट में दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता. सो अनलेस यहाँ पे क्या होना चाहिए? अनलेस यू डू नॉट बिल्ड और अनलेस यू बिल्ड योर सेल्फ एस्टीम. So it should be unless you build your self-esteem, you cannot achieve success in your life. So this is the error in this sentence. So very good, Mitesh. Very good, Praveen. Very good, Vishwanath. Very good, Anuj. Very good, Pushpak. So guys, I want all of you to participate. At least try तो करो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार? गलत हो जाएगा. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता. कोई ऐसा तो नहीं हम कौन बने करोड़पति खेल रहे हैं कि इनाम चला जाएगा. But at least आपको confidence build up होगा. So whosoever is watching, please participate in this, right? Chalo guys, let's move ahead. Question number 9. Not all medicines are sweet, nor every surgery is painless, but we have to be taking it. Yes guys. Very good, Pushpak. Not all medicines are sweet, nor every surgery is painless, but we have to be taking it. Very good, Decipher. Very good, Anuj. Very good, Atharv. See, we never use we have to be doing it. We have to do it. So guys, always remember to is followed by first form of verb. To cannot be followed by any other form. I have to do it. I have to be doing it. No. I have to do it. I have to learn English. I have to be learning English. Never. So not all medicines are sweet, nor every surgery is painless, but we have to take it. So it should be not. It should be we have to take it. That means we have to bear it. कि भाई हर दवाई मीठी नहीं होती, हर सर्जरी पेनलेस नहीं होती, लेकिन हमें बर्दाश्त करना पड़ता है. एक जनरल बात कर रहे हैं कि भाई you have to face the difficulties, right? Very very good, Gopal. Very good, Manisha. Very good, Mitesh. Victor, very well done. Very good, Rose. Very well done, guys. Keep up the good work. So this will give you confidence कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. और guys अपना स्कोर एक बार काउंट करते चलना. Let's see at the end मैं आप सबसे पूछूंगा कि आप फाइनली आपने कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कितने गलत हुए, right? चलो guys, so keep a track of your score. Next question, guys. There is a misconception that freedom means to be doing your own thing. Very good. I think Bhavya picked it up very quickly this time. Very good, Praveen. Very good, Pushpak. Very good, Rose. Very good, Prateek. Very good, Mitesh. See, there is a misconception that freedom means to be doing your own thing, or freedom means to do your own thing. Sorry. Yeah, I have not been well for some time ना, थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रहा है. So that is why I had to cancel the lecture that was there day before yesterday. So please bear with me, guys. And I'm really sorry कि मुझे पर्सनल सेशन में नहीं ले पाया. I really felt very bad. I wanted to help you out, but my health didn't allow. So chalo guys, very well done. So there is a misconception that freedom means to not to do your own thing. It means to be. So it should not be to be doing your own thing. It should be to do your own thing. So as we learned, to is followed by first form of verb, right? Thank you, Anuj. You two guys do very well in the exam, and I really wish from the bottom of my heart that you you come out with flying colors, that you do to the best of your abilities. Okay, chalo guys, next question. Shakespeare was better than any poet of his days according to critics. Good, Pushpak. Already out there with the answers. Thank you, Prateek. Yeah. Thank you, dear. God bless you. Very good, Prateek. Very good, Pushpak. Very good, Manisha. Manisha, remember हमने किया था एक कोर्स में
यही वाला रूल, इफ यू आर द सेम मनीषा। ये अभी जो लाइव प्रैक्टिस सेशन चलते थे उनमें भी देयर यूज्ड टू बी अ गर्ल मनीषा। तो ऑल अदर पोएट्स नहीं होगा प्रवीण। कंपैरिजन हमेशा याद रखना का, इस कंपैरिजन दो के बीच में होता है। एक का कंपैरिजन आप कभी दो से या दो से ज्यादा से नहीं कर सकते। जैसे मैं ये नहीं बोल सकता रोहित इज टॉलर देन ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास। अगर ऑल द बॉयज बोलना है फिर तो टॉलेस्ट नहीं बोलूंगा मैं उसको, फिर टॉलर क्यों बोलूंगा, राइट। वेरी गुड मितेश, सो इट शुड बी शेक्सपियर। अब कहाँ पे गलती क्या थी गाइस वो देखना। अब उसने क्या बोला है, थोड़ा इसको लॉजिकली समझना, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। शेक्सपियर वॉज बेटर देन एनी पोएट ऑफ हिज डेज अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। अब सुनने में ठीक लग रहा था, लेकिन एनी पोएट का मतलब क्या हुआ गाइस, कोई भी पोएट। तो अगर कोई भी पोएट बोल रहे हैं तो क्या क्या कह रहा है वो, कि शेक्सपियर वॉज बेटर देन एनी पोएट। एनी पोएट मीन्स कोई भी पोएट मान लो उससे बेटर शेक्सपियर था। लेकिन अगर कोई भी पोएट बोल रहे तो शेक्सपियर भी तो उसी में आ गया। सो इफ आई से एनी वन कैन डू दिस, एनी वन में सभी आ गया ना। सो शेक्सपियर वॉज बेटर देन एनी पोएट नहीं बोला जाएगा, एनी अदर पोएट। के शेक्सपियर को किसी भी दूसरे पोएट से कंपेयर कर लो, ही वॉज बेटर देन एनी अदर पोएट इन हिज डेज अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। ऑल द पोएट्स अभी अभी बताया मैंने था, ऑल के साथ कंपैरिजन हम एक का नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैं बोलता हूँ शेक्सपियर वॉज बेटर देन ऑल द पोएट्स, तो ऑल द पोएट्स में पहले भी शेक्सपियर खुद भी आ गया। और अगर मैं सबसे अच्छा बोल रहा हूं तो फिर मैं उसको बेटर क्यों, फिर तो मैं बेस्ट नहीं बोल दूंगा उसको। अगर मुझे यही बोलना है कि शेक्सपियर वाज बेटर देन ऑल अदर पोएट्स, फिर तो मैं यही बोल दूंगा शेक्सपियर वाज द बेस्ट पोएट ऑफ ऑल हिज ऑफ ऑफ हिज डेज। एम आई राइट? इट शुड बी नॉट एनी, इट शुड बी एनी अदर पोएट। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको गाइस, मैंने कुछ साल पहले बैंकिंग के एग्जाम में देखा था। क्वेश्चन था, हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन देखा था मैंने कि नो बुक इज होलियर टू द हिंदूज देन द गीता। अब ये क्वेश्चन था, नो बुक इज होलियर टू द हिंदूज देन द गीता, कि हिंदुओं के लिए गीता से ज्यादा कोई कोई बुक पवित्र नहीं है। लेकिन अब इसमें गलती क्या थी, नो बुक का मतलब तो कोई बुक है ही नहीं। तो वहां पे क्या आना चाहिए था, नो अदर बुक इज होलियर टू द हिंदूज देन द गीता। फिर एक और मैंने क्वेश्चन ऐसे एक बार ऑब्जर्व किया था, पेपर में आया था कि हाँ महात्मा, ऐसा एक क्वेश्चन था, महात्मा गांधी वॉज मोर फेमस देन एनी पॉलिटिशियन ऑफ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी वॉज मोर फेमस देन एनी पॉलिटिशियन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब वहां पे क्या आना चाहिए था, महात्मा गांधी वॉज मोर फेमस देन एनी पॉलिटिशियन और एनी अदर पॉलिटिशियन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। सो अब एनी पॉलिटिशियन में तो वो खुद भी आ जाते हैं ना। तो इस तरह से ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब आप एक को किसी दूसरे से कंपेयर करके बोल रहे हो कि वो अपने टाइम के सबसे अच्छा या उन सबसे अच्छा था, तो उसमें हमेशा एक चीज लगाई जाती है, दैट इज अदर, राइट। तो ये कंसेप्ट को याद रखना है गाइस। गॉट इट एवरीवन? चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। I ordered for a cup of tea, but the bearer brought it only at the end of the tea session. Yes, guys, I ordered for a cup of tea, but the bearer brought it only at the end of the tea session. Very good, Mitesh. Very well done, Manisha. Guys, always remember कि ऑर्डर के बाद कोई preposition यूज नहीं किया जाता। हम क्या बोलते हैं, आई ऑर्डर्ड सम फूड या आई ऑर्डर्ड फॉर सम फूड, लेकिन हमारी हैबिट होती है हिंदी की वजह से कि यार मैंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है। के लिए जब हम बोलते हैं ना, तो वो इंग्लिश में क्या आ जाता है, आई ऑर्डर्ड फॉर सम फूड, but it should be I ordered some food. I ordered a cup of tea. I ordered, I ordered, for example, I ordered some beverage or I ordered some Mexican food. So order is never followed by a preposition. Always remember that, guys. So I ordered a cup of tea, but the bearer brought it only at the end of the tea session. So that is the correct preposition to be, the correct form to be used here. So no preposition required after this, guys. Very well done. And again, guys, it's a humble request. I want all of you to participate. Okay. Chalo, guys. Next question. Lack of honesty is sometimes labeled as tact, public relations, or politics.
Yes guys, what is the error in this? Let's see if you can find the error. I told you ना, gradually we will increase the level of questions. और धीरे धीरे मुश्किल क्वेश्चंस भी आते रहेंगे अब इसके अंदर. So guys, don't forget to like the session and don't forget to share it so that it may reach someone out there who actually needs it. ठीक, डी लग रहा है, क्या एरर लग रहा है? और की जगह क्या आना चाहिए? एंड आना चाहिए, ये लग रहा है. नहीं, लेबल्ड विथ होता है, उसके साथ लेबल कर देना. लेबल्ड एज भी होता है सर. Guys, if you say unless you are sure about the mistake, don't just cook up a mistake. नहीं प्रतीक, और भी आता है, right? It can be done this or this. So वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है प्रतीक. Guys, there was no error in this sentence. Lack of honesty is sometimes labeled as tact, public relations or politics. So lack of honesty ये झूठ बोलने को कभी कभी पॉलिटिक्स बोल देते हैं, पब्लिक रिलेशन बोल देते हैं, या टैक्टिक्स बोल देते हैं. So there was no error in this sentence, guys. तो तभी मैंने बोला unless you are sure about your answers, do not mark it. Don't cook up the mistake, for no reason. तभी मैंने कहा ना, you should be confident कि जो आप बोल रहे हो, जो आप पिक आउट कर रहे हो, वो सच में मिस्टेक है भी या नहीं है. So there was no error in this. Yes, Victor, what was the error in C part? चलो guys, in the meantime next question पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे. In the aftermath of 11th of September, the American president's speech was broadcasted and televised all over the world. Very good, Rose. Yes, guys, no one else? Yes, Pratik, what is the error in A part? Guys, now there is something that you need to remember. See, there are certain verbs that do not change their forms. You remember? जैसे cut होता है, cut की तीनों फॉर्म क्या होती है? Cut, 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 right? Put की तीनों फॉर्म क्या होती है? Put, put, put. अब ये तो हमें शायद बचपन में सिखा दी गई थी, राइट? बट एक चीज याद रखना गाइस, इसी का एक एक्सेप्शन ऐसा ही एक और होता है, ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट एक ऐसी वर्ब होती है जिसकी तीनों फॉर्म्स, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट ही रहती हैं. सो ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, ये याद रखना. द टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द इंटरव्यू नाउ, ब्रॉडकास्टेड द इंटरव्यू नाउ, या ब्रॉडकास्टिंग नहीं बोलते. हाँ, ब्रॉडकास्टिंग तो हो सकता है लेकिन ब्रॉडकास्टेड नहीं हो सकता. ये याद रखना गाइस कि द टेलीविजन चैनल ब्रॉडकास्टेड द इंटरव्यू लास्ट नाइट. दिस इज रॉन्ग. अब ये सुनने में अजीब लग रहा है, मुझे मालूम है, क्योंकि हमारी हैबिट क्या रही है हमेशा ऐसे ऐसे वर्ड्स को ईडी लगा के चेंज करने की. बट यू नीड टू रिमेंबर दैट ब्रॉडकास्ट इज नेवर चेंज्ड इनटू ब्रॉडकास्टेड. So in the aftermath of 11th of September, the American president's speech was broadcast and televised all over the world. So broadcast की तीनों फॉर्म्स सेम रहती हैं गाइस. अब कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे, तभी ये सेशंस में हम लेके आते हैं आपके लिए. तो कुछ तो ऐसा हो जो नया सीखने को मिले, और क्या पता वो पेपर में कहाँ पे क्लिक कर जाए, कहाँ पे हेल्प कर जाए आपको, राइट? तो चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Acceptance of responsibility is a reflection of our attitude and the environment we operate in. वो necessary नहीं था, you can use, but it's labeled as a tactic होता ना, लेकिन tact होता है मतलब चालाकी. Tactics क्या होती है? Tactic और tactics होता है, लेकिन tact अपने आप में एक अनकाउंटेबल वर्ड होता है, तो इसके लिए उसके आगे अ नहीं यूज करते. टैक्टिक्स होता ना तो आप लगा सकते थे, जैसे इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टैक्टिक, राइट? लेकिन टैक्ट के आगे जरूरत नहीं होती. Yes guys, question number 15. Acceptance of responsibility is a reflection of our attitude and the environment we operate in.
Hey, yes, guys, there is no error in the sentence. Very well done. See, you should be sure with this as well. Now, you should be, you should know that if there is an error, you should be sure about the error. Unless there is an error, don't cook it up. Then either it would be no error, or it could be, you may have to skip it. Don't create errors unnecessarily. See, acceptance of responsibility is a reflection of our attitude and the environment we operate in. तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या दर्शाता है? एक तो हमारा एटीट्यूड दर्शाता है, और एक जिस इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं वो दर्शाता है कि देखो, जहाँ पे मजा आए काम करने में, जिस इन्वायरमेंट में अच्छा लगे, तभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करते हो, नहीं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हो, भागते हो। और दूसरा आपका एटीट्यूड भी होता है कि भाई आपका एटीट्यूड कैसा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो या नहीं चाहते। तो दिस सेंटेंस देयर इज नो एरर इन दिस। वेरी वेल डन गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द वार्ड्स ऑफ द हॉस्टल are allowed to do anything except to go out on their own at night. Very good, Prateek. Very good, Bhavya. Very good, Rose. Yes, Athar. Very good. See, guys, except is not followed by 2 plus V1. That means it is not followed by an infinitive. It is followed by a gerund. So, the wards of the hostel are allowed to do anything except to do this or except doing this, except going out on their own. It is followed by a gerund. Very good, Bhavya. Very good, Sai Krishna. So it should not be to go out, it should be going out. जैसे एग्जामिनेशन हॉल में टीचर बोलता है कि स्टूडेंट्स यू कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट टू लुक एट ईच अदर, एक्सेप्ट लुकिंग एट ईच अदर। तुम कुछ भी कर सकते हो, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, बस ये एक्सेप्शन है, राइट? सो except is not followed by an infinitive, that is 2 plus V1. It should be followed by a gerund, that is ing form of verb. Very well done, guys. All right, guys, moving on to the next question. Question number 17. The hawkers होते हैं, देखा है आपने, जो बिना परमिशन के, जैसे जो घूम घूम के चीजें बेचते हैं। जैसे आप कहीं मार्केट जाते हो तो कुछ लोग अपने पास सामान थैला लेके घूम रहे होते हैं और घूम घूम के चीजें बेच रहे होते हैं, या मतलब वो जैसे दुकान के बाहर ही कुछ, मतलब ऐसे ही बिना कोई जगह के ना, ऐसे कहीं पे भी अपनी वो जैसे होता है, देखा आपने, सामान लगा लेते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं, उनको हॉकर्स कहा जाता है। ठीक है, तो द हॉकर्स हैव बीन कैरिंग आउट देयर बिजनेस on the main pavement since 3 years, but no one has ever objected. Very good, Rose. The hawkers have been carrying out their business on the main pavement since 3 years, but no one has ever objected. Very good, sir. Very good, Prateek. See, guys, 3 years is duration of time. Since is used for a specific start point. So guys, whenever you see a perfect continuous sentence, कभी भी याद रखना गाइस, अगर आपको has been, have been या had been में कोई सेंटेंस मिलता है, ठीक है, और जिसके बाद आपको ing फॉर्म मिलती है वर्ब की, दैट मींस इट्स अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसमें हमेशा एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, और इसके लिए हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं, फॉर या सिंस। अब याद कैसे रखना है, सिंस कहाँ यूज होगा, फॉर कहाँ यूज होगा? सिंस इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट। एस से याद रखना गाइस, एस से स्पेसिफिक, एस से स्टार्ट पॉइंट। तो जब आपको एक स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट मिलता है तब हम यूज करते हैं सिंस, और जब हमें ड्यूरेशन बतानी होती है तब हम यूज करते हैं फॉर। जैसे स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट से क्या मतलब है, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 PM, कि मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूं। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी, राइट? ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2016। तो जब आपको स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट मिल जाता है, जैसे सिंस यस्टरडे, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, तो इनके लिए हम यूज करते हैं कि वो सुबह से गायब है। ही हैज बीन मिसिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, वो कल से ये कर रहा है। तो स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं सिंस। लेकिन ड्यूरेशन, जब आपको पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है, जैसे 3 PM की जगह अगर मुझे बोलना है कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, सो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, या आई हैव बीन, अब जनवरी की बजाय अगर मुझे बोलना है मान लो 3 महीने से,
सो ये 4 महीने से, सो वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 months, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 2016 अगर मुझे बोलना है 6 साल, तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव बीन ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 6 years, ठीक है। ये 6 सालों से यहाँ काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है फॉर और सिंस का। फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, जबकि सिंस यूज होता है स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट के लिए। Are you talking about the question? The hawkers have been carrying out their business on the main pavements for 3 years, but no one has ever objected now. आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इन जनरल पूछ रहे हो विक्टर। अगर देखो अगो लग जाएगा ना, फिर तो आप ये फॉर और सिंस बना ही नहीं सकते, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगो और बिफोर यूज होते ही नहीं है, फ्रॉम यूज नहीं होता है, सिर्फ 2 ही वर्ड प्रपोजिशन यूज हो सकते हैं, या सिंस या फॉर। इसमें मैं बोल सकता हूँ आई हैव बीन लिविंग हियर 10 years ago, नहीं। अगर मुझे 10 years ago का मतलब क्या होता है, 10 साल पहले, तो मैं ये बोलूंगा भाई आई स्टार्टेड लिविंग हियर 10 years ago, वो हो सकता है, उसका मतलब ही बिल्कुल अलग है। लेकिन वो उसका मतलब क्या होगा कि मैं 10 साल पहले मैंने यहाँ रहना शुरू किया था, राइट, बट मैं 10 साल से रह रहा हूँ, उस सेंटेंस में हम सिर्फ फॉर या सिंस यूज करेंगे। 3 years ago, फिर अगो में हम फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते ना विक्टर, कि आई मेट हिम 3 years ago। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता ना आई हैव बीन वर्किंग हियर 3 years ago। डजंट मेक सेंस, व्हाट माय पॉइंट। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years, वो समझ आ रहा है। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2016, वो समझ आ रहा है। लेकिन आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 3 years, या सिंस 3 years ago, या फॉर 3 years ago, दोनों गलत हो जाते हैं। तो अगो के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन ही नहीं सकता विक्टर, करेक्ट। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hardly I have finished writing when my brother snatched the foundation pen. अच्छा, फाउंडेशन पेन नहीं, फाउंटेन पेन होता है ना, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया शायद। फाउंटेन पेन, फाउंडेशन पेन नहीं, ये गलती नहीं है गाइस, ये गलती नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है, मैं ठीक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देयर इज सम अदर एरर इन द सेंटेंस, तो वो ढूंढना है आपने। हार्डली आई हैव फिनिश्ड राइटिंग व्हेन माय ब्रदर स्नैच्ड the fountain pen from my hand. वेरी गुड मितेश, सबको इन्वर्जन रूल पता है। प्रतीक, वेरी गुड। मनीषा, विक्टर, वेरी गुड। भव्या, वेरी गुड। प्रतीक, वेरी गुड। अथर। सो सी गाइस, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ नेगेटिव वर्ड, जो मैंने आपको एक रूल बताया था ना, जो वर्ड्स लिखवाए थे कि 2 नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में नहीं होते हैं, और दूसरा उसी का रूल एक और था कि इफ अ सेंटेंस और इफ अ क्लॉज बिगिंस विद अ नेगेटिव वर्ड, there is inversion rule that we have to use. What is the inversion rule? What does it say? That if a sentence begins with a negative word, the positions of subject and helping verbs are interchanged. That means helping verb पहले आएगी और subject बाद में आता है, and second यहाँ पे have की जगह had हो जाएगा, क्योंकि sentence past में था। So hardly had I finished writing, कि अभी मैंने बस लिखना खत्म किया ही था, तभी मेरा भाई मेरे हाथ से पेन छीन के भाग गया। So hardly had I finished writing when my brother snatched the fountain pen from my hand. Very good, Athar. Very good, Prateek. Very well done, guys. So this is called inversion rule. Next question, guys. India, which makes up 16% of the global population, carries 20% of their disease burden. Yes, guys, let's see if you are able to find the error in this. India, which makes up 16% of the global population, carries 20% of their disease burden. Very good, Mitesh. Very good, Aditya. Very good, Manisha. Very good. नहीं अथर, मेक अप फॉर नहीं, मेकअप फॉर का मेकअप का मतलब, मेकअप फॉर का मतलब होता है किसी चीज की कमी को पूरा करना। जैसे आई विल मेक अप फॉर द टाइम दैट वी हैव वेस्टेड, के जो टाइम खराब हो गया उसको मैं कवर कर लूंगा, वो मेकअप वो होता है, मेकअप फॉर समथिंग अथर, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या थी, देखो, द इंडिया विच मेक्स अप 16% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सिंगुलर है ना, तो अब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन इज अ सिंगुलर वर्ड। सो इंडिया विच मेक्स अप 16% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन कैरीज 20% ऑफ नॉट देयर डिजीज बर्डन, कैरीज 20% ऑफ इट्स डिजीज बर्डन। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका 16% पॉपुलेशन इंडिया में है, लेकिन जो डिजीज का बर्डन है वो उस पॉपुलेशन का 20% है इंडिया में।
बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस दो क्लॉजेज है ना, साई कृष्णा, इंडिया विच मेक्स अप 16% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी. इंडिया कैरीज 20% ऑफ इट्स डिजीज बर्डन. डिजीज बर्डन किसका? इस ग्लोबल पॉपुलेशन का. Alright? So that was the erroneous part here. Next question. Another baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids to speak to me. Very good, Bhavya. Very good, Mitesh. Very good, Manisha. Very good, Rose. नहीं, B में गलती ये नहीं है. Another baffling change that I notice in him nowadays. Present की बात कर रहा है. Past क्यों कर रहे हो उसको? Rose. इज आ रहा है, देखो आगे. Nowadays का मतलब क्या होता है? इन दिनों. वेरी गुड अथर्व. गाइस ये चीज याद रखना, अवॉइड के बाद यू शुड अवॉइड टू स्मोक या यू शुड अवॉइड स्मोकिंग. यू शुड अवॉइड ड्रिंकिंग, अवॉइड वेस्टिंग योर टाइम, यू शुड अवॉइड किलिंग टाइम. क्या मतलब टाइम पास करना अवॉइड करना चाहिए. तो अवॉइड के बाद हम फिर वही है, इन्फिनेटिव नहीं यूज करते. क्या यूज करते हैं गाइस? जरंड यूज करते हैं. सो अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउअडेज is that he avoids speaking to me. He avoids to speak to me nahi. He avoids speaking to me. That is the erroneous part here. Very well done, guys. Very good, Athar, Bhavya, Victor. Very well done. चलो guys. अब कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आएंगे गाइस. अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक पार्ट अंडरलाइन करके दिया है और उसके 5 रिप्लेसमेंट दिए हैं. अब आपको क्या करना है? आपको ये ढूंढना है कि इन 5 में से कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑप्शन है जो इसको यहाँ पे सही रिप्लेस करता है. ठीक है, तो अंडरलाइन पार्ट जो दिया है उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी है. दिस इज कॉल्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट. तो चलो गाइस करते हैं. कार लिफ्टर्स मतलब कार चोरी करने वाले. कार लिफ्टर्स स्टील होंडास एंड टोयोटास मोर देन अदर मॉडल्स बिकॉज दे कैन सेल देम फॉर पार्ट्स दैट आर वर्थ मोर देन द कार. सो जो कार चोरी करते हैं वो होंडा और टोयोटा ज्यादा चोरी करते हैं दूसरे मॉडल से ज्यादा, बिकॉज दे कैन सेल देम फॉर पार्ट्स दैट आर वर्थ मोर देन द कार. के पार्ट्स इतने अच्छे बिक जाते हैं जो गाड़ी से भी महंगे हो जाते हैं कभी कभी. तो उसने ऑप्शन दिए हैं कि मोर देन अदर मॉडल्स बिकॉज दे कैन सेल देम फॉर पार्ट्स दैट आर वर्थ मोर देन द कार. ये तो आई थिंक कहीं ऑप्शन आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था. सेकेंड है मोर देन दे स्टील अदर मॉडल्स. ये डिफरेंस है. कार लिफ्टर स्टील होंडास एंड टोयोटास more than they steal other models because can sell them. ये देखो, ये because can sell them for parts that are worth more than the car. More than they do other models because they can sell the parts that are worth more than the car, or more than any other model because they can sell them for parts worth more than the car, or more than other models because they can sell them for parts those are worth more than the car. Yes, guys, what do you think is the right replacement? Yes, Sai Krishna, what is your साई कृष्णा क्यों नहीं किया उसमें? नोटिस क्यों नहीं आया? क्योंकि नाउअडेज की बात कर रहा है वो. नाउअडेज का मतलब क्या हुआ है? इन दिनों मैंने उसमें बदलाव नोटिस किया था या किया है? क्या बोलते हो आप? अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउअडेज. एक और चेंज जो मैं आजकल उसके अंदर नोटिस करता हूँ वो क्या है कि वो ही अवॉइड्स इज दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी. कि वो मुझसे बात करना अवॉइड करता है. करता था नहीं. पास्ट में क्यों लेके जा रहे हो आप उसको बिना वजह? क्वेश्चन देखा था आपने ध्यान से साई कृष्णा? क्वेश्चन क्या था? अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउअडेज इज दिया हुआ था, प्रेजेंट था, इज दैट he avoids भी प्रेजेंट है. he avoids speaking to me. क्लियर हुआ? वहां पे हमने नोटिस क्यों नहीं किया? गुड. चलो. यस गाइस, मनीषा says 4, कल्याणी says 4, प्रतीक says 4, नितेश says 5. राइट गाइस, चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1. सी कार लिफ्टर स्टील होंडास एंड टोयोटास मोर देन अदर मॉडल्स. जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम दोनों तरफ को कॉमन लेके चलते हैं. जैसे हम क्या बोलते हैं अभी जो हमने किया था ना कि जैसे एग्जांपल देता हूं,
the climate of Mumbai is better than Chennai, or the climate of Mumbai is better than that of Chennai. अब देखो, जब हम मुंबई के क्लाइमेट को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो चेन्नई के क्लाइमेट से कंपेयर करना पड़ता है, राइट? सो द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, ये होता है बेसिकली। तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई। सेम चीज यहाँ पे है कि कार लिफ्टर स्टील होंडाज एंड टोयोटास मोर देन अदर मॉडल्स, नहीं, मोर देन अदर मॉडल्स नहीं, क्या होना चाहिए, मोर देन दे स्टील अदर मॉडल्स। लेकिन एक ही चीज को हम रिपीट नहीं करते। अब यहाँ पे गलती थी इस पार्ट में, बिकॉज दे कैन, अब ये गलत हो गया यहाँ पे। अब ये शुरू में ही हमने गलती देख ली कि ऐसे रिपीट नहीं कर सकते हम उसको। मोर देन दे डू अदर मॉडल्स बिकॉज दे कैन सेल द पार्ट्स दैट आर वर्थ मोर देन द कार। अब देखो गाइस, मैंने आपको चीज बताई थी, कंपैरिजन एक दो के बीच में होता है, ठीक है? वहां पे होंडास एंड टोयोटास प्लूरल है। सो कार लिफ्टर्स स्टील होंडास एंड टोयोटास more than any other model because they can sell them for parts worth more than the car, या more than other models। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब ये देखो, कार लिफ्टर्स स्टील होंडास एंड टोयोटास मोर देन दे डू अदर मॉडल्स, के कार लिफ्टर जो है वो होंडा और टोयोटा को ज्यादा चुराते हैं, मोर देन दे डू अदर मॉडल्स, के मतलब दूसरे मॉडल से ज्यादा वो होंडा और टोयोटास को ज्यादा चुराते हैं, बिकॉज दे कैन सेल द पार्ट्स दैट आर वर्थ मोर देन द कार। ठीक है, दे कैन सेल देम फॉर पार्ट्स नहीं, दे कैन सेल द पार्ट्स। ठीक है, वो पार्ट्स को ज्यादा बेच पाते हैं जो कि गाड़ी से भी ज्यादा वर्थ हो जाते हैं। द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर 3 है। सी मोर देन, मैं आपको सारे ऑप्शन में गलती बताता हूँ, मोर देन अदर मॉडल्स बिकॉज दे कैन, मोर देन अदर मॉडल्स यहीं पे गलती हो जाती है कि मोर देन कंपेयर, उनकी चोरी को आप अदर मॉडल से कंपेयर नहीं कर सकते ना। कार लिफ्टर स्टील होंडास एंड टोयोटास मोर देन अदर मॉडल्स नहीं, मोर देन दे डू अदर मॉडल्स। दूसरे मॉडल्स को चोरी करने से ज्यादा वो इन मॉडल्स को चोरी करते हैं। सो सेकंड यहाँ पे गलत हो गया था क्योंकि कैन नहीं हो सकता। फोर्थ में क्या गलती थी कि जब आप एनी अदर बोलते हो ना, तो एक का एक से कंपैरिजन होता है। जैसे इंडिया इज बिगर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बट ये नहीं बोल सकते हम कि इंडिया एंड चाइना आर बिगर देन एनी अदर डेमोक्रेसी। नहीं, दो को चीज फिर तीसरे से कंपैरिजन नहीं करते हम। कंपैरिजन के रूल समझो गाइस, कंपैरिजन सिर्फ दो के बीच में होता है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है गाइस, तुलना। तुलना का मतलब तराजू, देखा है तराजू की कितनी साइड होती है, दो। तो दो का मतलब दो नाउन्स को कंपेयर किया जाता है, दो से ज्यादा कभी कंपेयर नहीं होते। ठीक है, और फिफ्थ इसलिए गलत था, मोर देन अदर मॉडल्स बिकॉज दे कैन सेल देम फॉर पार्ट्स, दोज आर, ये यहाँ पे गलती थी। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर 3। okay? Car lifters steal Hondas and Toyotas more than they do other models because they can sell the parts that are worth more than the car. Got it everyone? तो सर ये वाले तो खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली अब ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया तो यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो गाइस। दिल नहीं छोटा करना सर ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहे। टेंशन के लिए नहीं आए हम यहाँ पे। हम किस लिए आए हैं, हम ये देखने के लिए कि हम कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना और हम पुश कर सकते हैं अपने आप को, एंड हाउ मच मोर वी कैन लर्न। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेक्टेशंस दैट द यूरोपियन यूनियन will help Greece and the UK borrow at cheaper rates has pushed the financial markets higher. Expectations that the European Union will help Greece and the UK borrow at cheaper rates has pushed the financial markets higher. Now the options are they will help Greece and the UK borrow at cheaper rates has pushed the financial market। ये तो अपना ऑप्शन वाला ही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन है ग्रीस एंड द यूके बोरो एट चीपर रेट्स हैव, ये डिफरेंस है गाइस देखना, हैव पुश्ड द फाइनेंशियल मार्केट्स टू हायर लेवल्स। ग्रीस एंड द यूके बोरो एट चीपर रेट्स हैज पुश्ड द फाइनेंशियल मार्केट्स टू हायर लेवल्स। फोर्थ इज ग्रीस एंड द यूके बोरो एट चीपर रेट्स पुश्ड the financial markets to higher levels, or Greece and the UK borrow at a cheaper rates push the financial markets higher।
Yes, guys, what is the right answer? Very good, Manisha. Very good, Prateek. Very good, Athav. See, the subject here is expectations, right? It should be plural. So expectations that the European Union will help Greece and the UK borrow at cheaper rates. It should not be has. So has यहाँ पे गलत था according to expectations. तो हम ऑप्शन नंबर 1 को और 3 को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे. Then push हम ऐसे बोल ही नहीं सकते. Expectations that the European Union will help Greece and the UK pushed. तो pushed यहाँ पे गलत था. So ये अगर आप एलिमिनेट करना सीख गए, the correct answer is option number 2. Very well done, guys. So expectations that the European Union will help Greece and the UK borrow at cheaper rates have pushed the financial markets to higher levels. Very well done, guys. Chalo, next question. Yes, guys, a rise in the number of protons when not accompanied by an increase in the number of neutrons always produce an unstable isotope. So a rise in the number of protons when not accompanied by an increase in the number of neutrons always produce an unstable isotope. When not accompanied by an increase in the number of neutrons always produce, when not accompanied by, अच्छा, the difference is, भाई सबसे पहले इनमें difference देखा करो, जो options दिए हैं उनमें difference कहाँ पे है, ठीक है? When not accompanied by an increase, by a increase in the number of neutrons always produce. When that is not accompanied by an increase. Fourth is if not accompanied by an increase. If not accompanied by an increased number of neutrons always produce. If not accompanied by an increase in the number of neutrons always produces. अच्छा, produce और produces में भी यहाँ पे difference था guys, ये देखो. थर्ड और फिफ्थ में produces दिया हुआ है, बाकी सब में produce दिया हुआ है, वो भी देख लेना एक बार guys. Yes, guys. So what should be the correct option here? Yes, guys. What is the correct option? See, you have to first of all look at the subject. A rise in the number of protons. A rise in the number of protons. A rise is singular, right? So a rise in the number of protons when not accompanied by an increase in the number of neutrons. So it should be not produce, it should be produces. So मैं वहीं से एलिमिनेट कर सकता था ऑप्शन नंबर 1 को, ऑप्शन नंबर 2 को और ऑप्शन नंबर 4 को, क्योंकि इसके साथ प्रोड्यूसेस आना चाहिए था और वो सिर्फ दो ही ऑप्शंस में था, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 5. अब बता दो गाइस कौन सा सही है. राइज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स when that is not accompanied by an increase in the number of neutrons always produces, या if not accompanied by an increase in the number of neutrons always produces. तो एलिमिनेट करना सीखो गाइस. सबसे पहले एलिमिनेशन आना चाहिए आपको. अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, इट बिकम्स very difficult, right? Yes, guys. So the correct option here is option number 5. When that, see, when you add additional information, you do not use conjunction into it. So that is why we can eliminate option number 3 as well. A rise in the number of protons when that is not accompanied by an increase, or if not accompanied by an increase. So that is the better option. So option number 5 is the correct answer. Right, guys? चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. मैं अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, मुझे फटाफट से 1 मिनट दो एंड इन द मीन टाइम क्विकली गिव मी द आंसर. ठीक है, ध्यान से पढ़ना. मैं क्वेश्चन पढ़ जाता हूं आपके लिए. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्लान टू बिल्ड a 10-story building in Pune, but due to unstable bedrock in that region, the project may have to be cancelled. So that's the question. Now the options are in front of you. Due to unstable bedrock in that region, the project may have to be cancelled. The cancellation of the project may be brought about due to unstable bedrock in that region. Cancelling the project, an unavoidable consequence because of unstable bedrock in that region. With the unstable bedrock in that region, the project is possibly cancelled, or unstable bedrock in that region may necessitate the cancellation of this project. So quickly read the options and quickly give me your answer, guys.
Yes, guys, have you figured out the answer yet? Hindustan Construction Corporation planned to build a 10-story building in Pune, but due to unstable bedrock and in that region, the project may have to be cancelled. कि उन्होंने प्लान किया था लेकिन हो सकता है अनस्टेबल बेडरॉक की वजह से प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़े या हो सकता है. So due to unstable bedrock in that region, the project may have to be cancelled. The cancellation of the project may be brought about due to unstable bedrock in that region. May be brought about. Bring about का मतलब होता है कोई बदलाव लेके आना. So that is, we can eliminate option number 2. Cancelling the project, ये तो वैसे ही गलत था, ये सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं बैठ रहा था इससे तो. कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्लान टू बिल्ड अ 10-story बिल्डिंग इन पुणे बट कैंसलिंग द प्रोजेक्ट, ये वैसे नहीं बोल सकते. बट विद द अनस्टेबल बेडरॉक इन दैट रीजन द प्रोजेक्ट इज पॉसिबली कैंसल्ड. अब ये श्योरिटी हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे अब ये था, अनस्टेबल बेडरॉक इन दैट रीजन मे नेसेसिटेट द कैंसलेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. यस गाइस, कैन यू गिव मी एनी मोर आंसर्स? 2 तो मैंने एलिमिनेट कर दिया आपके लिए, 4th नहीं हो सकता. मितेश सी क्या बोल रहे हैं देखो एक बार. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्लान टू बिल्ड, कि उन्होंने प्लान किया था, दे प्लान टू बिल्ड अ 10-story बिल्डिंग इन पुणे बट ड्यू टू अनस्टेबल बेडरॉक इन दैट रीजन द प्रोजेक्ट मे हैव टू बी कैंसल्ड. के भाई उन्होंने प्लान किया था लेकिन अनस्टेबल बेडरॉक होने की वजह से द प्रोजेक्ट इज पॉसिबली कैंसल्ड. इस भी बोल रहे हो और फिर पॉसिबली कैंसल्ड का मतलब क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 5. ठीक है, मे हैव टू बी का मतलब क्या होता है? ठीक है, मे का मतलब शायद नहीं होता गाइस, मे का मतलब होता है अफर्मेटिव. So the correct option is option number 5. Yes, Mitesh. That Hindustan Construction Corporation planned to build a 10-story building in Pune, but unstable bedrock in that region may necessitate the cancellation of this project. But the project may have to be cancelled. Nahi. May be brought about. Nahi. The correct option here was option number 5. Chalo guys, next question. Question number 25. No typical properties of astatine are known because due to its high radioactivity, it immediate decays into something else. So no typical properties of astatine are known because due to its high radioactivity, it immediate decays into something else. So it immediately decays into something else. It decays immediately into something else because of its high radioactivity. Or known if because of its high radioactivity, it immediately decays into something else. Known if ये दे रखा है. Astatite are known because of its high radioactivity, it immediately decays into something else, or known due to its high radioactivity, it immediately decays into something else. Yes, guys. देखो ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं हम आराम से. नोन बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेडियो एक्टिविटी, ये गलत. 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं. Yes, guys. So what should be the correct option out of 1, 2, and 5?
Guys, option number 1, why is it wrong? See, because and due to, these are both conjunctions which are put together here. So known due to the fact, so इसलिए हम वन नहीं कर सकते यहाँ पे, are known due to the fact it decays immediately into something else because of its high radioactivity. उसने बाद में जोड़ दिया है, लेकिन वो रेडियोएक्टिविटी की वजह से ना जानना या डीके होना था. So the correct option was option number 5. Yes. No typical properties of astatine are known due to its high radioactivity. It immediately decays into something else. That is what makes it a logical sentence. आरुषि सेकंड क्यों नहीं? known due to the fact that, due to the fact के बाद फिर due to भी बोल दिया, फिर that भी बोल रहे हो. No typical properties of astatine are known due to the fact that it decays into something else. Right? Fact भी बोल रहे हो, फिर that लगा के फिर अगला sentence बना रहे हो, फिर आगे because लगा रहे हो. It doesn't make sense. So option number 5 is the correct option. चलो guys, फिर से error detection के questions पे आते हैं. Let's see if you if you properly read all the questions, if you prepared for this section. So let's start, guys. Question number 26. Before he started out, he had collected all the informations about the country he was going to visit. Very good, Athar. Very good, Rose. Before he started out, he had collected all the informations about the country he was going to visit. Guys, we never use this word in plural. Guys, कुछ word exactly उत्तम. Informations कभी नहीं होता. Because information itself is a collective noun. Information means collection of data. That's called information. ये कुछ collective noun होते हैं, guys. Knowledge, information, advice, abuse, jewelry, scenery, machinery, cutlery, ministry, right? Luggage, baggage, wastage, work. So these words are not made into plural because they are collective nouns. So before he started out, he had collected all the information about the country he was going to visit. Very well done, guys. Chalo. Next question. The assurance that he will be cured from the disease pleased him very much. Very good, Alvin. Very good, Uttam. The assurance that he will be cured from the disease pleased him very much. Guys, if you have prepared prepositions well, you would know that cure is never followed by from, it is followed by of. There is no cure of this disease. There is no cure of cancer. You cannot be cured of cancer. Cured from cancer नहीं. लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं कि उसे बड़ी खुशी हुई कि उसे पता चला कि उसको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा. The assurance that he will be cured, not from the disease. Cure के बाद of use होता है, guys. याद रखना है. So there is no cure of foolishness. Yeah, there is no cure of cancer. The cure is always followed by of. Very good, Alvin. Nitesh. Next question, guys. Her ability to talk to strangers is one of her stronger points. Yes, guys. Her ability to talk to strangers is one of her stronger points. Very good. So her ability to talk to strangers is one of her strongest points. उसके strongest points में से एक point है her ability to talk to strangers. Stronger comparison के लिए use होता है, guys. We all know that, right? तो यहाँ कोई comparison है ही नहीं है. एक ही इंसान की बात हो रही है. तो her ability to talk to strangers is one of her strongest points. Very well done, guys. चलो, question number 29. My brother-in-law, along with his daughter, were present at the function. Very good, Bhavya. Very good, Uttam.
Very good, Athar. Very good, Nitesh. See, only conjunction which can, add or which can make two nouns the subject is and. तो हमें याद रखना गाइस, अगर दो नाउन एंड के अलावा किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हैं तो सेकंड जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, जो सिर्फ फर्स्ट नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है. सो सेकंड नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सो ये सेंटेंस बेसिकली पता है क्या था, ये जो अलोंग विद हिज डॉटर था ना, ये वैसे सेंटेंस के एंड में आता था, या हम भी यूज करते हैं. जैसे मैं अगर मैं इसको बिना इसके पढ़ूं तो देखना, माई ब्रदर इन लॉ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन अलोंग विद हिज डॉटर, ये होता है एक्चुअली सेंटेंस. लेकिन उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी ना अलोंग विद हिज डॉटर, वो वहां से काट के पीछे से और सेंटेंस में सब्जेक्ट के आगे लगा दी और आपको कंफ्यूज कर दिया. आपको पढ़ने में क्या लगा कि ब्रदर इन लॉ और उसकी डॉटर दोनों थे, तो दोनों थे तो वही आना चाहिए. बट इफ यू रिमेंबर के 1+1 करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, एंड के पास. सो इट शुड नॉट बी वर, इट शुड बी वॉज. वेरी वेल डन एल्विन, डोंट आंसर अहेड, वी आर डूइंग इट वन बाय वन. वेरी वेल डन गाइस. चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं. आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आई विल कम एंड सी यू. Yes guys, what is the error in this sentence? गाइस हमेशा याद रखना, फ्यूचर के सेंटेंसेस में कभी भी दोनों जगह पे विल यूज नहीं होता. राइट जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेंटेंस होता है उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है. सो विच पार्ट हैज एरर इन दिस? आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आई विल कम एंड सी यू, या आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम अमेरिका? Guys, I will call you when I will reach home or when I reach home. So always remember, we never use I mean, we do not use both the sentences in future continuous. Yes, Anuj. All right, guys. Next question. Thank you, Bhavya. I hope this will prove beneficial for your, for your exam. So, chalo guys, next question करते हैं. The child picked up a burnt paper from the debris left behind by the inferno. Yes, guys, what should be the error here? Very good, Athar. Very good, Bhavya. Very good, Arushi. Very good, Mitesh. So the child picked up. See, guys, burned is a form of verb. Lekin we are not using a verb here. We have to use an adjective here. So there is a difference between burned and burnt. He burned the paper. He burned the paper. अगर verb की तरह होता तो हम burned use करते. लेकिन the paper was burned or burnt. So burned or burnt में difference होता है, guys. Yes, burned is the third form of verb, whereas the adjective is burnt. जला हुआ. Burnt होता है जला देना और burnt होता है जला हुआ. So the child picked up a burnt paper from the debris left behind by the inferno. Very well done, guys. Next question. When she finishes her studies, she wants to become a journalist. Yes, guys. When she finishes her studies, she wants to become a journalist. मैंने खुद ही आंसर दे दिया, आई थिंक. देखो अब वही मैं बोल रहा था ना कि जब वो अपनी पढ़ाई खत्म करेगी तो उसके बाद वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है. सो व्हेन शी फिनिशेस नहीं, व्हेन शी फिनिशेस हर स्टडीज शी वांट्स टू बिकम अ जर्नलिस्ट. वेरी वेल डन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर वर टू चाइल्डहुड बडीज हु वेंट थ्रू स्कूल एंड कॉलेज एंड वुड इवन जॉइन द आर्मी टुगेदर.
गाइस अच्छा, आई थिंक मुझे अब गलती समझ आ रही है गाइस, ये जो सी है ना, सी पार्ट यहाँ तक नहीं है, सी पार्ट यहाँ तक है, ज्वाइन तक है. So there were two childhood buddies who went through school and college and would even join, यहाँ तक C part है, would even join the army together. Yes guys, see देखो past में चल रहा है पूरा सेंटेंस, वो क्या बोल रहा है, there were two childhood buddies who went, ये भी पास्ट में चल रहा है, तो इसको हिंदी करके देखो एक बार. There were two childhood buddies who went through school and college and even joined the army together. मैंने कहा था ना गाइस, जब भी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है, there were two childhood buddies who went through school and college and even joined the army together. Next question guys, when a person refuses to forgive, he is locking doors that someday he might be needing to open. नहीं, वुड हैव नहीं आएगा, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि दो दोस्त थे बचपन के, जो स्कूल भी साथ में गए, कॉलेज भी साथ में गए, और उन्होंने आर्मी भी साथ में ही ज्वाइन की. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर वर टू चाइल्डहुड बडीज हु वेंट थ्रू स्कूल एंड कॉलेज एंड इवन जॉइंड द आर्मी टुगेदर. चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन अ पर्सन रिफ्यूजेस टू फॉरगिव, जब कोई इंसान माफ नहीं करता, ही इज लॉकिंग डोर्स दैट समडे ही माइट बी नीडिंग टू ओपन. वो दरवाजे बंद कर रहा होता है जो दरवाजे शायद किसी दिन उसको खोलने पड़े. So when a person refuses to forgive, he is locking doors that someday he might be needing to open. Yeah, he might need to open. There is a simple understanding guys. ये जो verbs of senses होती है ना, जैसे look, sorry, see, जैसे मैं आपको लिखवा देता हूँ कुछ verbs. See, believe, know, understand, smell, ये जो verbs of senses होती हैं, taste, और क्या होते हैं अपने, फील, नहीं फील तो फीलिंग, फील तो बोलते हैं, और क्या था, सीम, हाँ. So guys, remember that these verbs are not used in ing forms, अगर unless कोई एक्सेप्शन है तो उसके अलावा, राइट. हाँ, अपीयर, यस. सो बेसिकली देयर आर मेनी अदर्स, बट आपको इससे एक लॉजिक समझ आ जाएगा. ये जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस होती है, सेंसेस मतलब जो फिजिकल एक्शंस नहीं होते, जो हम अपने अंदर जो इंटरनल जो मतलब जो एक्शंस होते हैं ना, जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस और आई अंडरस्टैंड दिस. अंडरस्टैंड इज नॉट अ फिजिकल एक्शन. आई एम नोइंग हिम और आई नो हिम. आई एम बिलीविंग यू और आई बिलीव यू. Right, so these verbs are not used in ing forms, so that is what you have to remember. Right, so when a person refuses to forgive, he is locking doors that someday he might be needing to open or he might need to open. और वैसे भी एक जनरल बात हो रही है guys, तो it has to be kept in the first form, that is present indefinite. कि जब कोई आदमी ऐसा करता है, तो वो दरवाजे बंद कर रहा होता है जो कुछ दिन बाद उसको शायद खोलने की जरूरत पड़े. So when a person refuses to forgive, he is locking doors that someday he might need to open. Chalo guys, next question. Hi Tushar, how are you? Can say hi to me first. Hi Tushar. Chalo guys, question number 35. If you have someone with all the ability, but if he is not dependable, do you want him as a part of your team? अच्छा, दो तुषार आ गए अभी, एक तुषार शेट्टी है ना, एक तुषार रंजन. हेलो तुषार, हेलो तुषार. तुषार कपूर भी आना बाकी है अभी मेरे ख्याल में. I'm just kidding, मजाक कर रहा हूँ. So, how are the preparations going?
इफ यू जस्ट ज्वाइन द सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, नहीं तो मार खाओगे मुझसे जाने से पहले. Yes guys, question number 35. If you have someone with all the ability but if he is not dependable, do you want him as a part of a team? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. बट और इफ इकट्ठे नहीं आते, किसने बोला भव्या? You can buy the dress but if you do not like it you cannot exchange it. बोलते नहीं है कि तुम खरीद लो लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम बाद में एक्सचेंज नहीं कर पाओगे. I think you can relate to this, Bhavya. You can buy the dress, but if you don't like it, you cannot exchange it. ये किसने कहा कि बटन इफ इकट्ठे नहीं आते? पहले ही कर दिया तुम. थैंक यू. नहीं मितेश, ऑल द एबिलिटीज नहीं. यस अथर्व. तुषार बहुत क्यूपिड हो रहा है आजकल. तुषार फरवरी में कुछ मना नहीं है आपका शायद ना. अभी 1 तारीख आ रही है, उस दिन बहुत अच्छा दिन है. उस दिन सब सही. अभी 1 अप्रैल को ना बिंदास हो जाएगा एकदम से. डोंट वरी. सो गाइस, इसमें क्वेश्चन का देखो, इसमें गलती थी. इफ यू हैव समवन विद ऑल द एबिलिटी, भाई अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास सारी क्षमता है लेकिन वो डिपेंडेबल नहीं है, तो जब हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं ना, देखो सेंटेंस शुरू किससे हुआ है? इफ से. सो इफ यू हैव समवन विद ऑल द एबिलिटी बट इफ ही इज नॉट डिपेंडेबल, ठीक है. अब यहाँ पे डू यू आएगा या वुड यू वांट हिम एज अ पार्ट ऑफ योर टीम? क्या तुम उसे अपनी टीम में रखना चाहोगे? ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है गाइस, और ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है. ये कंडीशनल सेंटेंस में जब आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते हो तो यू हैव टू यूज वुड. हम उसको रियलिस्टिक क्वेश्चन नहीं बना सकते, राइट? सो ये इज दिस इज यू नो this is what you need to understand. If you have someone with all the ability but if he is not dependable, do you want him as a part of team is a realistic question. But the hypothetical question here is, would you want him as a part of your team? अब मैंने आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है लेकिन डिपेंडेबल नहीं है, क्या तुम उसे अपनी टीम में लेना चाहोगे या क्या तुम उसे अपनी टीम में रख रहे हो? Getting the point? So it should be would you. कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं हो पाए. अरे हाँ यार, बट पता है उत्तम बहुत ज्यादा नहीं है. सिर्फ 3 ही रूल्स हैं उसके. आपको 3 कंसेप्ट समझने, 3 कंसेप्ट क्या, 3 सिचुएशन समझनी है. इसमें 3 रूल बनते हैं. यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल सेंटेंसेस, जैसे इफ इट रेन्स मॉइस्चर इंक्रीजेस, वो दोनों में फर्स्ट फॉर्म रहता है. फिर दूसरा जो है वो है रियलिस्टिक, जो मैम हमें बचपन में बोलती थी, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक फ्यूचर इंडेफिनिट में. इफ यू डू नॉट फिनिश योर होमवर्क आई विल पनिश यू. जो इफ वाला है वो प्रेजेंट में, दूसरे वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में. जैसे इफ यू कॉल मी आई विल पिक यू अप, ये रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है. और फिर थर्ड है हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल में बेसिकली क्या ध्यान रखना है, हाइपोथेटिकल में ये आती है, इफ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड बाय दिस हाउस, या इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप. तो ऐसे 3 ही रूल्स हैं जो आपको इसमें फॉलो करने पड़ते हैं उत्तम. ज्यादा नहीं होते, तो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू इट वेरी इजीली. अनुज, मेरे हिसाब से तो ये जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पहले करने चाहिए, राइट? देयर आर बेसिकली 3 सेक्शंस गाइस, 2 सेक्शंस इन सिंपल. फर्स्ट इज योर ग्रामेटिकल सेक्शन एंड सेकंड इज योर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, राइट? तो वोकैबुलरी आपके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के अंडर ही आ जाती है. तो देखो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को टाइम लगता है because you have to read the whole passage for reading comprehension, या क्लोज टेस्ट में पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, या रीअरेंजमेंट में पूरा सारे सेंटेंसेस, उसमें टाइम लगता है और टाइम की वजह से बच्चा पैनिक कर जाता है. सो इफ यू आस्क कि सर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती, तो मैं पहले क्या करता, ये छोटे क्वेश्चन जो होते हैं जैसे एरर डिटेक्शन है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट है या डबल फिलर्स हैं या फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं या वर्ड रीअरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अगर पहले मैं वो करता, ताकि क्या हो जाए, देखो गाइस कट ऑफ ऑब्वियसली इसमें हाई जाना है, तो मेरा कोशिश होना चाहिए मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, लेकिन उसका एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए. वो क्या है, पहले छोटे क्वेश्चन करो सो दैट यू डू नॉट पैनिक इन द एंड. पहले बड़े करने लग जाओगे तो टाइम, अगर बाय चांस टाइम निकल गया, राइट, या टाइम की वजह से टाइम क्रंच हो गया, या इफ यू हैव पॉसिटिव ऑफ टाइम, वहां पे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट? सो माय स्ट्रैटेजी, स्टार्ट विद द shorter questions and then move to the longer questions. ठीक है, चलो guys next question पे चलते हैं. Question number 36. While it is not worth to have been holding grudges, it doesn't make sense to be bitten time and again. देखो वैसे grudges क्या होता है, मन में बदले की भावना रखना.
वो क्या कहता है कि भाई देखो वैसे तो ये ठीक नहीं है कि आप मन में बदले की भावना रख के बैठे रहो, लेकिन इस चीज बात की सेंस नहीं बनती कि आप बार बार धोखा भी खाओ। सो दैट डजंट मेक सेंस कि आप हर बात को माफ कर दो, हर चीज को माफ कर दो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब आप हर बार धोखा खाओ। तो मन में बदले की भावना भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार धोखा भी नहीं खाना चाहिए। So while it is not worth to have been holding grudges, it doesn't make sense to be bitten time and again. Very good guys. So गलती क्या है? While it is not worth to have been holding grudges, to के साथ have plus been कितनी बार कर चुके हैं हम सेम चीज आज के ही सेशन में guys. While it is not worth to hold grudges, it doesn't make sense to be bitten time and again. Very good. So to is followed by first form of verb, remember? So it is not worth to hold grudges. It doesn't make sense to be bitten time and again. Right? Next question, guys. One can be truthful without having been cruel, but that may not always be the case. Yes, guys. One can be truthful without having been cruel, but that may not always be the case. Very good, Muskan. Very good, Arushi. Very good, Mohanty. Very good, Harshit. Very good, Uttam. So one can be truthful without having been, without having के साथ कैसे यूज कर रहे हैं having के साथ verb की third form यार? This is absolutely wrong. So one can be truthful without being cruel. So one can be truthful without being cruel, but that may not always be the case. Very well done, guys. Keep up the good work. Chalo, the next question. Excellent cannot be achieved through luck. It is the result of a lot of hard work and practice. I think ये सभी का हो जाना चाहिए. This is an easy one. Yes, Muskan. Very good. Mohanty. Very good, Mitesh. Very good. Athar. Very well done. Very good, Prerna. Very good, Arushi. See, excellent is an adjective. What we are referring to here is a noun, right? So it should not be excellent. It should be excellence. Very good, Uttam. Very good, Harshit. So excellence cannot be achieved through luck. It is the result of a lot of hard work and practice. Very well done, guys. So we need to understand the difference between a noun and an adjective, right? So excellent is an adjective, whereas excellence is the noun. Very good, guys. Next question. It is not uncommon in seeing the prey outsmarting the predator. Prey hota hai shikar, predator hota hai shikari. So it is not uncommon in seeing the prey outsmarting the predator because one is running for its food and the other for its life. That is true. कि भाई जो शिकार होता है वो मतलब बच जाता है most of the times. क्यों? क्योंकि जो शिकारी है वो सिर्फ खाने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन शिकार जो है वो अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा है. Right? So what is the error here, guys? Very well done, guys. अब मैंने आज ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सी इन वर्ब्स को हम ing फॉर्म में नहीं रखते. Right, so it is not uncommon in seeing or it is not uncommon to see. So it is not uncommon to see the prey outsmarting the predator because one is running for its food and the other for its life. So very well done, guys. The correct option is option number B. Next question, guys. The first lesson I got in my military days was that one should love his country more than anything else. The first lesson I got in my military days was that one should love his country more than anything else. In my military days भी ठीक है मितेश, ड्यूरिंग भी ठीक है, इन भी गलत नहीं है कि उन दिनों. इन माई कॉलेज लाइफ बोलते नहीं है, ड्यूरिंग भी ठीक होता है, इन भी ठीक होता है. वेरी गुड उत्तम. नहीं मुस्कान, देयर इज एरर इन दिस. गाइस ऑलवेज रिमेंबर whenever you see one when it is used as universal one. तो ये चीज सुनना गाइस, कभी भी आपको याद रखना है कि अगर हम वन को यूनिवर्सल वन की तरह यूज करते हुए अगर आपको कभी लिखता है, यूनिवर्सल वन का मतलब क्या है गाइस? वो बात एक के लिए बोली जा रही है लेकिन वो अप्लाई सब पे हो रही है. तो ये अब जैसे मैं बोलता हूँ वन शुड रिस्पेक्ट, अब मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ गाइस. वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स या वंस पेरेंट्स. वो क्या कहना चाह रहा है कि एक इंसान को अपने
माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। अब वो एक ही इंसान को करनी चाहिए या सभी के लिए बोल रहा है वो बात? मतलब वो बात एक के लेके बोल रहा है लेकिन वो अप्लाई सभी पे हो रही है, इसको बोला जाता है इस यूनिवर्सल वन। तो अब यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि कभी भी आपको सेंटेंस में यूनिवर्सल वन मिलता है ना, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोनाउन होता है इट इज ऑलवेज केप्ट वन। वन शुड रिस्पेक्ट नॉट हिज, नॉट देयर, बट वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। एक बार क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम का ही। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट one should respect the religions of others as much as his own। और बच्चे को ना इस सेंटेंस में गलती नहीं पता चली। क्या गलती है गाइस इसमें? महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। समझ आ रहा है कि महात्मा गांधी मानते थे कि एक इंसान को दूसरों के धर्म की उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी वो अपने खुद के धर्म की करता है। यस, मैंने कोर्स में बताया था ये चीज, है ना, लाइव प्रैक्टिस सेशन के दौरान उत्तम, कि महात्मा गांधी बिलीव दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन, नहीं एज मच एज वंस ओन। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, यूनिवर्सल वन विल ऑलवेज बी पेयर्ड विद वन। ऑलराइट, so same चीज यहाँ पे guys, the first lesson I got in my military days was that one should love his country more than anything else. No, one should love one's country more than anything else. That is the correct answer here guys. Okay, वो सेशंस तभी बहुत हेल्पफुल होते हैं, तभी आप उनसे सीख पाते हो, बिकॉज वो कंसेप्ट डिस्कस होते हैं वहां पे, तो तभी वो आपको, आप उसको बीट कर सकते हो। Got it everyone? चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस। अब आपको देखना है इसमें क्या करना है। अच्छा हाँ, वही है, बस आपको उसको सेंटेंस को 4 पार्ट में ब्रेक किया है और आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है गाइस, सो प्लीज पुल अप योर सॉक्स एंड लेट्स सी हाउ यू परफॉर्म नाउ। बर्थ मार्क्स ऑन द बैक could be signs of spinal cord syndrome, right? TCS, something कोई short form है, it should be SCS, not TCS, गलत दे दिया उसने शायद। So birth marks on the back could be signs of spinal cord syndrome, a neurological disorder caused by tissue attachments. Guys, so you have to find the erroneous part in this. Birth marks on the back could be signs of spinal cord syndrome, a neurological disorder caused by tissue attachments. Very well done guys. सी साइंस होते हैं बहुत सारे, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस, लेकिन जब हम एक की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बर्थ मार्क्स ऑन द बैक कुड बी अ साइन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय टिश्यू अटैचमेंट्स। सो इट शुड बी अ साइन ऑफ। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेल डन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, as a part of the new survey, if you say you are unhappy, the city police may call to ask you that reason. As a part of the new survey, if you say you are unhappy, the city police may call to ask you that reason. Yes guys, what is the error in this? Can you find it? Yes, Athar, very good. See, we do not need to re-refer the same, the same point in a single sentence. As a part of the new survey, if you say you are unhappy, the city police may call to ask you not that reason. The city police may call to ask you the reason.
वो उसी सेंटेंस का हिस्सा है, दैट रीजन कौन सा, वो उसी सेंटेंस में ही तो है, तो इट शुड बी नॉट कॉल टू आस्क ही तो है नितेश. So as a part of the new survey, if you say you are unhappy, the city police may call to ask you the reason कि भाई किस वजह से अनहैप्पी हो आप. एक ही सेंटेंस में जब अब तक हमने कोई क्लॉज चेंज नहीं किया तो दैट का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता. तो एज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, if you say that you have a query, we may call you to ask you that reason, or we may call you to ask you the reason. So it should be the reason, not that reason. So the correct option was option number D. Next question, guys. By keeping the brain engaged, anyone can learn to control immediate cravings. इसमें तो आई थिंक गलती मिल जाएगी सबको. By keeping the brain engaged, anyone can learn to control immediate cravings. That's okay, Mitesh. Very good, Prerna. Very good, Gagan. What is the error here, guys? वो बताओ आप मुझे, क्या लग रहा है, क्या क्या होना चाहिए, क्या गलत है इसमें. वेरी गुड मोहंती. लर्नड नहीं, और लर्नड के साथ मैन भी लगाना पड़ेगा. लर्नड एडजेक्टिव होता है अथर्व. By keeping the brain engaged, anyone can learn to control immediate cravings. ये है सही आंसर, सिंपल. Become learn to control नहीं, become को omit करो यार. Become और learn दोनों verb की तरह यूज कर रहा है. Anyone can learn or anyone can become learn. Anyone can learn to control. So we do not need to use because I'm sorry, become here. So by keeping the brain engaged, anyone can learn to control immediate cravings. So that is the error here. Very well done, guys. Nonetheless, I knew you have found the erroneous part, but वो क्या ठीक होगा, वो प्रैक्टिस थोड़ा सा आपको अभी अब यहाँ पे करना जरूर है, guys. ठीक है. चलो next question, guys. Foodies have realized that there is more to eating out than switch restaurant that has predictable menus and sterile decors. So foodies have realized that there is more to eating out than switch restaurant that has predictable menus and sterile decors. Very good, Muskan. नहीं अथर, there is more to eating out. जब हम कंपेयर करते हैं ना तो सेम वर्ब रखते हैं दोनों क्लॉजेस में. So foodies have realized that there is more to eating out than switching restaurant. तो यहाँ पे क्या आएगा, guys? So foodies have realized that there is more to eating out than switching restaurant that has predictable menus and sterile decors. So there is much more to that. So it should be switching out, right? Very well done, guys. Chalo, next question. The doctors are being worried that the ace cricketer will suffer from a heart ailment for the rest of his life. Yes, JP Mohanty, क्योंकि पहले देखो, there is more to learning English than read newspaper or than just reading newspapers. जब हम कंपेयर करते हैं ना दो वर्ब्स को या दो एक्शंस को, तो दोनों को सेम में रखना होता है. सो दैट वुड बी रॉन्ग, मोहंती. वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड मोहंती. The doctors are being worried. यहाँ पे सिंपल गलती दिख रही है. The doctors are worried that the ace cricketer will suffer from a heart ailment for the rest of his life. Are being worried नहीं, are being नहीं, सिर्फ are worried होगा. Very good, Gagan. Very well done, guys. Have been worried, हाँ वो हो सकता है, कैसी डी, या फिर are worried हो सकता है. Are being worried is not the correct usage, right? Very good, Gagan. Very good, Mitesh.
So yes guys, now quickly tell me your score out of 45 questions. Then I'll give you the homework for today, what you have to do from your on your own. Yes guys, if you are keeping track of your score, can you tell me how many right, how many wrong? And guys, now I'm giving you the homework for today. Now these are the questions. Now I want you to try these questions and I want you to try to answer. So guys, you have to answer these questions in the comment section of the video, not in the chat box right now, but later on. And I will provide you the PDF of this session, the complete session, in the Telegram group. So the link for our Telegram group is given in the description of the video, guys. So you have to answer these 3 questions and give me the solution in the comment section later on, not now. Late हो गया तो तुम कोई बात नहीं. 38, Mitesh, not bad, yeah. Anyone else who's kept track of his or her score? Anuj, 39, great. चलो guys, so I think और किसी ने ध्यान नहीं दिया अभी, but guys, I think you're doing really well, and I think this is time to give you the pep talk. Guys, it's do not panic in the exam. Panic मत करना कभी भी. Questions बहुत easy आएंगे. At least phase 1 में तो बहुत ज़्यादा easy आएंगे. So you don't have to worry. Your aim should be to quickly be through with all the questions and score well. The only thing that I should suggest you right now is do not panic. अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है या एक क्वेश्चन स्किप हो रहा है, don't panic. पैनिक करोगे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा. So don't panic. Believe in yourself. Believe in your preparation. ठीक है कि जो आपने किया है सही किया है, and जो आपने प्रिपेयर किया है, जो आपने पढ़ा है, that is with you. So don't let the anxiety, don't let the anxiety push you to the limits. So don't do that. Just be calm, composed. Before your exam begins, close your eyes for probably 10-15 seconds. Think of your preparation journey, the journey that you have undertaken, and think of all the hard work that you have put in, and then take a couple of long deep breaths and then open your eyes and be ready for the exam, right? कल नहीं उत्तम, कल तो यार रेस्ट का डे है, एक दिन पहले एग्जाम से पहले नहीं होगी, बट tomorrow we don't want to push you. Tomorrow get some rest. जितना होगा पढ़ लिया अब एक दिन में, एंड में मतलब आधा दिन give yourself some rest. Probably many students would be traveling और ये सब ना, तो कल क्लास नहीं होगी guys. So this is the last class for this RBI Assistant exam. So guys, before we finish, I really wish you all the very best for your journey ahead. Do your give your best, do well in the exam, believe in yourself, and I'm damn sure you will come out with flying colors. Okay. So all the best to everyone who is there, who's going to watch this video. God bless you guys. Keep up the good work, or just maybe if you believe in God, so you can urge your God to maybe bless you with with success this time. So ask yourself and believe in yourself. That is the key of cracking these exams. Do not panic and give your best. That is what you can do. See, simple सा लॉजिक है यार. इस टाइम पे आउटकम का सोच के बच्चा पैनिक कहाँ करता है कि क्या रिजल्ट होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. देखो, इस टाइम पे आउटकम आप नहीं चेंज कर सकते, राइट? तो उसके बारे में सोच के टेंशन लेने से कोई लॉजिक नहीं बनता. अभी आप सिर्फ क्या चेंज कर सकते हो? अपने एफर्ट्स. तो अपने एफर्ट्स को पे ध्यान दो, आउटकम पे ध्यान मत दो. इफ यू कैन डू दैट, यू विल डू रियली वेल. तो अगर आप अपने एफर्ट्स चेंज कर दोगे, आउटकम अपने आप चेंज हो जाएगा, राइट? तो आउटकम की सोच के अपने आप को पैनिक नहीं करना, एफर्ट्स पे ध्यान देना है आपने, राइट? फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट. सो व्हाट मुस्कान, द बेस्ट इज दैट फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट करके निपट के क्लियरली बाहर बैठो, मतलब बाहर आराम से बैठो. अगर सोचो लास्ट शिफ्ट होती तो आप वहां पे दूसरों की तरफ भाग रहे होते, कोई बता दे, काश कोई बता दे कि क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे, वो ज्यादा पैनिकी और फिनिकी हो जाएगा. am I right? The first day first shift, it's better. Okay, be done with it and come out with your give your best and come out with the best version of you. Okay, don't worry Muskan. पहली शिफ्ट देखो, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप आउटकम से डर रहे हो. So you cannot change the outcome now. What you can change now is your efforts, your outlook towards the exam. If you go confidently, if you walk in there with your head held high, or if you are if you are cracking under pressure, वो चीज है बस.
तो एक दो क्वेश्चन छूटे हैं, गलत हो, डोंट वरी, इट्स ओके, ठीक है, आगे सारे ठीक होंगे, तो पैनिक नहीं करना है, एंड गिव योर बेस्ट, रेस्ट, लीव इट टू गॉड, एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन, ठीक है। तो चलो गाइज, हैविंग सेड दैट, आई विश यू ऑल द सक्सेस अहेड, and I wish that this journey turns out to be fruitful and beneficial for you. So guys, I hope these sessions have helped you in this in this preparation journey. I hope we have been able to support you in this in this endeavor, and we hope that we have provided you with the right mentorship, right? So thank you so much for joining in once again, guys. All the very best, keep up the good work. And if you have any doubts, you can call us on this number during the office hours, guys, 8146207241, or you can drop us an email as well on hello@edutap.co.in. So guys, after the exam, do share your feedback with us. Do share how the exam went. Do share that how many questions you attempted, and with what accuracy did you attempt. So do share that with us, and we will be coming out with the analysis of the paper right on the exam day. So don't forget to join in, and we would definitely be there to help you out, right? So stay safe, stay healthy, guys, and keep up the good work, and all the very blessed, and God bless you, guys. So take care, and happy learning to all of you.